What's up, everybody? So today was 10th of March, and today, as usual, I sat at the New York sessions. मैं 5 बजे बैठा यहाँ पर. Basically, 5 बजे से पहले ही I was monitoring the situation in the market because today it was a very tough day because nothing was happening. Nothing, absolutely nothing happened. पूरा लंदन सेशन में कुछ मतलब लंदन सेशन में obviously price was like it was going up. There were no clean moves. So so basically हुआ ये कि मैं 5 बजे यहाँ पे बैठा इस कैंडल पे, and at this point this whole range for me was a no trading range for me because इतनी ज़्यादा यहाँ पे विक्स थी, रिजेक्शंस थी, there was terrible price action over here, like बड़ा चॉपी सीन था. तो मेरी ना दो पॉसिबिलिटी थी. पहली पॉसिबिलिटी थी कि इफ़ प्राइस क्लोजेस below this zone, below this support, if a candle comes, it closes below this support, I can look for price to, there will be a very high probability for price to move down then. And if price breaks above this resistance, then it'll have a very big probability to move up. So basically अब सीन पता क्या था, मसला ये आता है कि ये रेजिस्टेंस तो थी एक सही, लेकिन इसके जस्ट ऊपर ही एक रेजिस्टेंस ये भी थी. इफ़ यू सी इट ऑन द लेफ्ट ओवर हेयर, सही है, वो रेजिस्टेंस थी ये वाली. अब सीन ये था, लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस एंड शो यू. अब सीन क्या था, सीन ये था कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट जोन था. अब सीन ये था कि ये तो हमारे पास थी रेजिस्टेंस, लेकिन इसके जस्ट ऊपर ये रेजिस्टेंस भी थी. तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ कैंडल क्लोजर अबव दिस रेजिस्टेंस, नॉट दिस रेजिस्टेंस, सही, बिकॉज इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाके अगर कैंडल क्लोज हो भी जाती, इट देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाए एंड इट वुड जस्ट बी अ लिक्विडिटी ग्रैब. सो टू अवॉइड दैट एंड इन ऑर्डर टू बी मच मोर like in order for me to be much more अबे यार गर्मी हो रही बड़ी. So for me, in order to be like much more convinced for price to move in my direction, I would want price to do exactly what I was visualizing at that point. And I'm tired, I can't even speak right now. सही. तो ये सीन था. अब सीन, अब तो इसलिए मैंने ना आई वाज लाइक लुकिंग फॉर दिस रेजिस्टेंस. अब सीन क्या था, अब सीन ये था कि प्राइस वेंट यहाँ पे 5 बज गए थे, 5:15 पे ये कैंडल ये बनी, फिर एक कैंडल ये बनी, फिर एक कैंडल ये बनी. अब दिस वाज वेरी स्लो, और इस पॉइंट पे आई वाज लाइक जिज्ड आउट, और मेरा बड़ा ना मतलब बड़ा डिसिप्लिन हो गया मेरे इस पॉइंट पे. सही है. अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि एट दिस पॉइंट एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट दिस वाज अ कैंडल व्हिच वाज फॉर्म्ड. Now let me like go to the 30 minutes. Okay, so this was the candle which was formed right over here. ये कैंडल थी, सही है. अब ये कैंडल फॉर्म हुई एंड आई वाज लाइक इट वाज वेरी टेम्पटिंग फॉर मी टू टेक अ ट्रेड एज सुन एज दिस हाई वाज broken, but because of the rejections over here and over here, I did not take that trade. So I'm gonna tell you then when did I take a trade. So basically I have a screen recording of all of this. So यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस जस्ट स्टार्टेड टू डू वट एवर इट वॉज डूइंग, और यहाँ पर वही सेम चीज़ हुई थी. अब नाउ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर इज, अभी देयर आर लाइक 27 seconds लेफ्ट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज. नाउ मेरा क्या सीन था, मेरा सीन था कि as soon as that candle closes, as soon as this candle closes, all I was looking for now is that for the next candle I was looking for it to break down and then start to break the high, and I'm gonna enter right on the right as soon as the high breaks. सही है. तो now the next candle was retracing, I was waiting for it to break this high, so as soon as it breaks the high I'm gonna enter. सही है. ये मेरा पूरा एनालिसिस था. सो अब इस पॉइंट पे आई एंटर्ड ओवर हेयर. यस, आई एंटर्ड ओवर हेयर. थोड़ा सा जल्दी एंटर हो गया था मैं, बट it is what it is. Like from now on I'm gonna use limits because I didn't wanted to enter at this point, but मैंने ना बस अपना माउस ऊपर रखा था, अचानक से खुद ब खुद मेरा उंगली दब गई. इतना प्रेशर होता है इस पॉइंट पे, मेरी उंगली खुद ब खुद दब गई, थोड़ी सी जल्दी दब गई थी. इस पॉइंट पे आई वाज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक बिकॉज प्राइस still didn't break the high and I had entered. सही है. So अभी स्टॉप लॉस भी नहीं मैंने सेट किया हुआ, I did nothing. सेम. So now all I was waiting for is for the price to move up. अब इस पॉइंट में ना मेरी फट रही थी, to be really honest. सही है. मैंने बोला यार गलती से मैंने गलत एंट्री ले ली है. सही, लेकिन फिर वॉल्यूम kicked in and then price started to go in my direction. अब at this point I was like looking to set my TP and was looking to set my stop loss as well. So stop loss, I decided to set it till the low of the current candle because see,
if price has broken the high of the previous candle in an uptrend in a high volume time, then it has no business to go down and breach its low again, right? It's basic price action. So based on that, I placed my stop loss over here. When did I place my stop loss, man? हाँ या आई प्लेस में स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस $35 का था. सही, सिर्फ $35 आई रिस्ट. मैंने ना मसला इस पूरी ट्रेड में ना ये गलती थी, और वो थी कि आई रिस्ट वे टू लेस. मुझे एटलीस्ट 0.2 लॉट से एंटर होना चाहिए था, डबल विद द क्वांटिटी आई एंटर राइट नाउ. इफ आई हैड एंटर्ड विद दैट क्वांटिटी आई वुड हैव जस्ट क्लियर्ड माय फेज वन राइट नाउ एट इन दिस ट्रेड. सही है, तो ये सीन था. अब आई हैड सेट माई टीपी. I didn't set my TP yet. I had set my stop loss, and all I was looking for now is to set my TP. अब सीन क्या था? सीन ये था कि देखो, over here this is an obvious rejection, this is an obvious resistance, but rationally this should my TP, right? Because this is a very important zone. यहाँ से price में बहुत बड़ा dip ली है, लेकिन at this point I was confused between two things. One, let this trade run and try to pass my phase one in this trade. सही है. If I अगर मुझे वो करना होता, so then this was my TP. And the second was to act rationally and just close my trade as soon as it hits the resistance, because there's a high probability that as it hits the resistance, it's gonna retrace, and it's gonna retrace because of the resistance as well, and because there's such a big move towards the upside from below that price is bound to retrace. Like, it can't go in one direction, right? So based on all of these things, I was like trying to like think, what should I do? Whether I should let my TP stay till here, or whether I should like book my profits as soon as price hits this range. So yeah, so at this point I was confused between these two things. लेकिन देखो, I placed a yellow line over here. So as soon as price taps into the yellow line, I know what to do. I didn't set my TP all the way till here because in case price moves with a lot of volume, सही है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं प्लेस किया था. अब सीन क्या था, अब जस्ट द ट्रेड बस जस्ट रनिंग. सही है, $97 $96. अब इस पॉइंट में ना मैं बस ये सोच रहा था, यार क्या करूँ, इस येलो लाइन पे टीपी अपना एग्जिट कर दूँ ट्रेड या नहीं करूँ. अब मैं सोच रहा हूँ यार येलो लाइन पे रेजिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार देखो, मैं अच्छा ट्रेडर हूँ. सही है, मुझे पता है दिस इज़ नॉट न्यू फॉर मी, लाइक आई कैन मेक प्रॉफिट्स एवरी डे. सही है, तो अगर मैं जान के चाह रहा हूँ कि यार मुझे एक ट्रेड मिल गई, मैंने इसी ट्रेड में अकाउंट क्लियर करना ही करना है, तो दिस इज़ नॉट अ रैशनल डिसीजन, दिस इज़ एन इमोशनल डिसीजन, राइट? बिकॉज चार्ट इज शोइंग मी दैट दिस इज हियर, देयर इज अ रेजिस्टेंस. सो इस वजह से मैंने टीपी यहाँ पे लाके प्लेस कर दी कि नहीं, मैं $150 $100 जो बच गया है फेज वन का, वो मैं बाद में अगली ट्रेड में बना लूँगा, कोई मसले की बात नहीं, अच्छा सेटअप लूँगा, बन जाएंगे. लेकिन एट दिस पॉइंट आई हैव टू एक्ट रैशनली एंड रिमूव माई इमोशंस. सही है, forget about the funding account, forget about the phase one and the profit criteria. Just act what the chart is telling you. If the chart is telling you to take your to book your profits, just book them. अब इस पॉइंट पे मैंने I also break even my trade because if like I was running in $100 profit, and if I am running in profits, then I should not like close this trade in a loser. So yeah, but because of that as well, I break even the trade, and now at this point I was just letting this trade run till my TP. So yeah. अब फिर मैंने जैसी प्राइस ऊपर जाने लगी, फिर मैंने वही चोल हो रही थी हाथ में, फिर मैंने अपनी टीपी ऊपर कर दी. लेकिन फिर मैंने बोला नहीं. और एज सुन एज प्राइस टैप्ड इनटू दैट जोन, सही है, इस पॉइंट पे मैंने आई जस्ट बुक्ड. सही है, मैं ट्रेडिंग भी खोला इस पॉइंट पे, मैंने देखा यार कि यहाँ पे जोन है. सही, ये जोन है, रेजिस्टेंस है. मैंने बोला जस्ट बुक इट. मैं एक बार और चेक किया, आई सेड ओके लेट्स जस्ट फ्रिकन बुक दिस देन. सही है, मैंने जस्ट फटाफट गया मैं MT5 पे ओवर हियर, एंड देन आई closed my trade over here. सही है, so this was the trade for the day, guys. Very good trade. Today was a very tough day. I hadn't even slept. I didn't even sleep the whole night, and like, terrible sleep schedule is going nowadays, but this is what it is. Now let me show you what happened after this. So basically this happened after this. So yeah, as soon as I hit my TPs over here, price came down
and then it took that obvious retracement which I was expecting it to take. सही है, वही हुआ जो मैं सोच रहा था. बहुत अच्छा डिसीजन था to book my TPs over here, act rest and done for the day. सही है. तो today I have made around, I think I I made around 4% today, या 4% बनाया मैंने. सही है. और risk to reward मेरा बहुत ज़्यादा था. The only problem in this trade was that I had risked way too less, man. I should have risked at least 100, at least 0.2 lots. If I had done that, I would have cleared my account today. I would have cleared it today. But that didn't happen. पता है इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना कि मैंने ना अपना स्टॉप लॉस ऐसे सेट नहीं किया यार. तो $35 का ही स्टॉप लॉस था. तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिला मुझे. 1:5 का था. बट ये जो रिस्क मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, ये रिस्क मुझे मास्टर अकाउंट पे यूज़ करना चाहिए. अभी एट दिस पॉइंट वेयर आई एम इन द स्टूडेंट फेज, तो मुझे इस पॉइंट पे ज़्यादा ही रिस्क करना चाहिए. सही है. तो nonetheless, I'm gonna make the rest $150 tomorrow or day after tomorrow, anytime when I spot a good setup. You know what? Yesterday, अगर तुम लोग मेरी वीडियो देखो तो मैंने क्या बोला था इसमें. मैंने बोला था कि I am visualizing today's day to be a very big day, and I'm gonna make a lot of money today, and that's what happened. So this is the power of manifestation as well, guys. Always believe in that. So yeah, so made around $196 today. Opened my trade at 5202, closed it at 5222. Captured around 200 pips today. So a very very good day. The only problem today was that I risked way too less. So it is what it is. Like मैं बना लूँगा पैसे से, ये बात में कोई मसले की बात नहीं है. We'll take another trade and pass it. So done for the day, guys. Really really glad that I took this trade today. And tomorrow is CPI. I will try to stay away from CPIs, to be really honest, but let's see what happens. I'm gonna set at the charts, but if I spot a good setup, I might enter with 1% risk. So that's it for me, and hopefully see you guys tomorrow on the next trade, and also manifesting that trade. In that trade, we are gonna pass our phase 1. So hopefully, inshallah. So we'll see you guys in the next video. Bye bye. Take care.